हूँ सेमिनार में उपस्थित हूँ। आज का विषय 2024 का अंतरिम बजट से है। बजट पेश किया गया। संसद में बजट में अधिकांश जो पिछले उनके को ही आगे बढ़ाया और रिपीट किया है। उन्होंने लेखा जोखा रखा है। बजट आगामी वर्ष के लिए एक रूपरेखा उसकी छाया प्रतीत होती है। उससे यह प्रतीत होता है कि आगे आर्थिक रूप से अपना देश काफी प्रगति करेगा और उसी दर में अधिकांश आज जो आंकड़े दिए हैं कि आयकर के रिटर्न बढ़े हैं और टैक्स भी बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ी हुई है। इससे यह प्रतिपादित होता है कि रमोले की देश प्रगति की ओर। विस्तृत जानकारी अपने स्पीकर्स महोदय आपको समय समय पर पूरी जानकारी डीप में जो भी संशोधन हुए उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request our National Joint Secretary, Sri Sandeep Agrawal, for to say a few words. Thank you, Lakshman ji. Our National President, Sh.Narayan Jain ji, immediate past President, our motivator mentor, Sri Pankaj Ghiya ji, National Treasurer, Sri Anil Mathur Saab, NVPC, Rajesh Mehta ji, our past President, Sri Ganesh Purohit ji, and our Zone Chairman, Sri Navlakha ji. On the behalf of Central Zone, I welcome you all, and you all know that the Central Zone every year do Union Budget webinar on day 1 itself. So this year we also organized that webinar on discussion on Union Budget. I'm sure that you will all benefited with our learned speakers. Today's learned speaker Anil Mathur Saab, Bhaskar ji, Prashanth G, and our P.Jain ji. They will elaborate you about the today's changes in Union Budget. Thank you all. Keep joining us. We will soon announce some more webinar series and webinar programs. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. So now I request our National Vice President, Sri Rajesh Mehta ji, to say a few words. Thank you, Lakshman ji. Respected National President Narayan Jain Saab, immediate past President, respected Pankaj Ghiya ji, past President, Senior Advocate, respected Ganesh Purohit Saab, our Zonal Chairman, Vijay Navlakha ji, Secretary Sandeep Agrawal ji, Secretary Lakshman Kashyap ji, National Treasurer Anil Mathur Saab, our speakers, and all the participants. Please mute कर लीजिएगा अपने आप budget has been presented in the दूसरे दिन सर प्लीज एक बार तो आप क्रॉस टॉक्स मत करें, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। लक्ष्मण म्यूट ऑल कर दीजिए, म्यूट ऑल दोबारा कर दीजिए। थे जब तो सारा और सिर्फ दोबारा स्पीकर का माइक खोलिए, म्यूट ऑल कर दीजिए। माइक बंद कर दें, दूसरे लोग अपना माइक बंद कर दें। म्यूट ऑल कर दीजिए लक्ष्मण, और सिर्फ स्पीकर का म्यूट। लक्ष्मण जी आप दूसरों का माइक को ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। म्यूट ऑल कर दीजिए। So we welcome you all and I hand over mic to Lakshman ji. Thank you, sir. Now I request past President Sri Ganesh Purohit ji to say a few words. Sir, unmute yourself. Yes. Purohit sir. Good evening, all my friends. National President Shri P.Jain Sahab, past President, immediate past President Shri Pankaj Ghiya ji, Rajesh Mehta ji, Navlakha ji, and all my friends. Friends, this had been only interim budget, and there is nothing much in this budget. But even then, as per our tradition, since we are organizing a budget meeting on the same day, and we have with us very learned speakers like Shri Anil Mathur ji and my other friends. So it's already time for us to start the budget meeting. We have left with only 4 minutes. So I don't want to take much time. And I thank you for inviting me to speak few words. Thank you very much. I hand over mic back to Shri Lakshman Kashyap ji. Thank you, sir. Now I request our immediate past President Sri Pankaj Ghiya ji to say a few words. Really, we wanted to have a great discussions on direct and indirect taxes.
and what a fantastic day we had thought that it would be. But I got a good message on WhatsApp that the finance minister has saved us from all the webinars, seminars, conferences, as she had announced a budget which has no implications on direct or indirect taxes. And let's say we don't want to buy new act or new books, or we don't have to read now for 2 days, understand the complications and other things. And this is what we always wanted, a hassle-free budget. And it would have been a great thing if some scheme or some complications in the income tax or the GST would have solved out for the small and medium taxpayers. But alas, it is an interim budget. We look now forward to the full budget which would be announced after the elections. All the best to the webinar and seminar, because now we can discuss, apart from the budget, all other complicated issues and recent judgments. And we will have a good time to listen to the speakers. All the best to the team and all the best for the new year. Thank you. Thank you, sir. Now I request our National President, Sh.Narayan Jain ji, to say a few words. Thank you, Lakshman Bhai. I think I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Thank you. My dear, my President Pankaj Ghiya ji, Ganesh Paroi ji, and our Joint Chairman P.Jain ji, Lakshman Bhai, and Anil Mathur ji, and other friends. Friends, as rightly said by Pankaj Ghiya ji, there are only a few amendments in the budget, and one is relating to reduction of the tax demands, tax disputes, that is up to rupees 25,000, up to assessment year 10-11, and thereafter for 5 years up to assessment year 15-16, it will be, waiver will be only in respect of demands up to rupees 10,000. And some tax benefits which are available till 2014, there the deadline has been proposed to be extended to 2015, and that is all in line and all expected and well done by the Honorable Finance Minister. We will discuss more when the full budget is presented in the month of July. Meanwhile, it is more a budget relating to economists, and I had some television discussions on the budget in some of the TV channels, and I find that a lot of steps have been proposed so far the economic growth is concerned, and I hope that the overall impact for the country will be the better economic condition, and our satisfaction is that the growth rate of our economy, Indian economy, is about 7%, whereas the other leading companies in the world, their growth rate is less than 3%. So there we can have satisfaction that yes, India's economy is robust despite pandemic and the global slowdown. So we hope that we, the tax practitioners, will help the government and will help our taxpayers, our clients, to grow together. Our clients should be happy, and at the same time, the government should also be able to collect right amount of tax. There is the role of the All India Federation of Tax Practitioners, which I am sure, with the help of you all, we will be able to fulfill. Thank you very much. Thank you, sir. So now I request CA Anil Mathur, sir, National Treasurer, AIFTP, for request further budget process. Thank you, Lakshman ji. Respected National President Narayan Jain sir, IPP Mr. Pankaj Ghiya sir, Past President Mr. Ganesh Paroi sir, Zone Chairman Navlakha ji, National Vice President Rajesh Mehta sahab, Joint Secretary Sandeep Agrawal ji, my co-speakers Mr. Prashanth from Bangalore and Mr. Kapil Jain from Delhi. What I can say is
welcome to this webinar organized by the Central Zone of AIFTP, which has been organizing continuously webinars on various important subjects of direct and indirect taxation since COVID period. And this is the third time in a row that we are having a live discussion on budget proposals on the very same day when the budget has been presented by the Honorable Finance Minister in the Lok Sabha. I'm grateful to the organizers for giving me this opportunity. Of course, being an interim budget, there are hardly any proposals worth discussing. But what I thought that like 2019 budget, there may be one or two issues which can be discussed. And as spoken by the national president, this is more for the economist. And if we come to this, what we think that what the government proposes and it expects that it will continue to have a 7% growth. And with the 7% growth, it is expected that we may touch a $5 trillion economy by 2027 and $7 trillion economy by 2030. This being Amrit Kal, and it is also expected that this Amrit Kal would last up to 2047. And this is the vision of the present government that by 2047, we make India a developed nation. For this, what is needed is a continuous economic benefits, infrastructure developments. And the fourth thrust that this budget has also proposed is there is an increase in the capex. It was expected that we will have an increase of around 12,000 crores. I think we have, as far as the budget pronouncement goes, we have around 11,500 crores as for that. But the other aspect which economists would prefer is the expenditure on rural infrastructure and measures to boost the rural economy. We can develop if we are able to stop, not exactly stop, but we can curtail the rural migration. And if we are able to provide the things there itself, so it would be a better provision. The third is continuity in the infrastructure development. As we know, the tax collections, they are almost on an automatic mode. And we expect that there is an increase in tax collection by around 13%. If the 1.1 times or 1.3 times is the increase in the tax collection, we definitely expect that the fiscal deficit, which is 5.8% at the moment, may go down to 5.1% by fiscal year 2024-25. And as per FRBM Act, as promised by the government, it will come down to around 4.5%. So taking a cue from the speech of Honorable President and Honorable Prime Minister, it was expected that it is going to be an interim budget with the focus on vote on account only. And I thought that there would be some measures for Nari Shakti. You know, even in our profession, that the Institute of Chartered Accountants, when we were there were few girl chartered accountants. Now I think the students outnumber, the female student outnumber the male, and similarly the position of law profession also. This is sixth consecutive presentation of budget by Honorable Finance Minister, the 5 being the full budgets and this being the sixth budget. And she is on par with late Morarji Desai, who between 1959 to 1964 presented 6 consecutive budgets. And at that time also there were 5 full budgets and 1 interim budget. Of course, overall, he is the highest person, I mean, as far as the number of budgets presentation are concerned. He in all presented 10 union budgets, which is the highest for the country so far. So with this, we come to the
direct tax proposals which have been proposed by the Honorable Finance Minister in this budget. In fact, there are only 8 clauses. The clause starts from clause number 3 to 8, and in to 10. And out of these 8 clauses, the 7 clauses. Just excuse me, I think my co-speaker wants to speak. Hello. Hello. Mathur sir, you continue. Prashanth G is joining, sir. No, yeah, Prashanth Ji has got a problem. I think the maximum number has been there. So I request Mr. Lakshman to kindly just let him come in. Sir, he's trying. So Yes, sir, I am trying. If you permit, let's take Deepak Ji. If Deepak Ji join. So Kapil Jain Ji. Because we have reached the maximum number, so please log in. What we can request that the existing members can switch over to the YouTube so that the speakers are able to join there. So, well, coming back to the direct tax proposals, may I continue, Mr. Lakshman? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Coming back to the direct tax proposal, as I said, there are from clause 3 to clause 10, and out of these 8, the 7 clauses are the sunset clauses, and 8 is relating to section 206C, that is the TCS provisions, for which there were a lot of hue and cry in the earlier periods. So, in brief, there are amendments in section 10, which is income not forming part of the total income. Clause 4D, which related to the investment division of the offshore banking. The sunset clause was 2024. So 1 year period has been given for that. For special income for non-residents, that is income from leasing out the aircraft and anything, the business which was supposed to be by 2024, that has also been given an extension of 1 year. Then this business trust 56 to 10, this has also been given an extension of 1 year. Then startups, ATI, AC, then another 1 year extension to them. Similarly, section 80LA this was on account of direction of offshore business and banking, overseas banking businesses. This has also been given a 1 year extension. Transfer pricing 92CA, the government was given a direction to suitably modify the criteria for arm's length prices by 2024. Since it was government could not do so, so another 1 year extension for that purpose has also been given. And of course, the DRP dispute resolution process 1 year. Sir, Prashanth Ji joined. Yes, okay, good. Prashanth Ji, I'm just covering some of that, then the rest you take up. So the major, the biggest clause in terms of paras is 206 capital C, that was TCS on this overseas tour packages and liberalized remittance scheme. As you know, what this proposed amendment has done, it has given effect to the notification of 10 of 2023, that was in June 2023, when these proposals of 5% or 20% of TCS were initially made applicable on liberalized remittance scheme as well as overseas tour packages. So there were a lot of difficulties which were being faced by the person concerned. So to mitigate that, a circular was issued by the CBDT in June 2023, the circular being circular number 10 of 2023, where the effect of that circular has been now given in the main act itself. If you sum up, because initially
the rate of tax was proposed by 20%, then it was reduced in some cases to 5%, and in some cases the rate which was 5% has been enhanced to 20% from with effect of October. In lump sum, I mean, if I, for the benefit of the viewers, what are the provisions which in fact existed as on 1st of October 2023 also, is that if you are having any liberalized remittance scheme, if you are making payment to a liberalized remittance scheme, the threshold limit of 7 lakhs of rupees was still there. And if it is beyond 7 lakh of rupees, then up to 1st of April, 1st of October 2023, the rate was 5%, which has been now enhanced to 20%. However, if this LRS is for medical treatment or education, then the rate would be 5% only and not the 20%. And if the LRS is on account of loan availed for any education purposes, then the TCS rate is 0.5%. As far as this overseas tour packages were concerned, earlier, no threshold limit, 5%. Now, beyond 7 lakhs of rupees, it is 20%. So the effect of the circular has now been made applicable to, has been made part of Act. And after proviso number 5, another proviso has been added that as if you have deducted tax between July to October 23, then the rates would be treated as if they were prior to as of April 23. So the assessee, if is deducted on a higher rate or on the lower rate, no impact is to be given. So in fact, and then two more amendments. Again, there are some sunset clauses only. One relating to income tax appellate tribunal, that the direction by the government 2024 was a sunset clause that has been extended to 2025. And of course, the procedures for the tribunal, any direction, that has also been extended. So friends, in all, these are the 8 amendments which has been proposed by in the direct taxes. There are 2 amendments in the indirect taxes, which my colleague Mr. Kapil Jain would take over. Now I request Mr. Prashanth to supplement or add or put his other views if there are any on this budget proposals. For the benefit of the viewers, I can tell you that Mr. Prashanth, being an authority on the income tax, is also a spokesperson for Bharatiya Janata Party in Karnataka. So he can add his economic views on this budget also. Over to Mr. Prashanth, please. Thank you, Mathur sir. Good evening, all. It's a great pleasure to address members of AIFTP. Before I begin, it's my custom to thank my gurus. I take this opportunity to place on record my deep sense of respect and gratitude to my mentor, C.A.S. Venkatramani, who's been a guiding force and factor in my endeavor of profession. Also, my respects to C.A.D. Devraj and C.A.A. Shankar, who mentored me at various stages of my professional career. Now, the entire amendments of the interim budget, Mathur sir has brought it out. There's nothing more to be said on that. Coming to the theme of the budget, and one thing I can say with complete authority and with humility at my command is that this government has not gone for a populist budget at all. Though there was every chance to dole out some SOPs and schemes before the union, before the general elections, it has not been done. And the 50 minutes of speech, what we saw today, was more of a report card. It was a 10-year report card being placed before the public at large. One important fact that how digital India has transformed the economy, and also how the lives of farmers have changed by virtue of direct benefit transfer. Because if 34 lakh crores has been transferred using Jan Dhan accounts, it has resulted in a saving of about 2.7 lakh crores, which means the duplicate Aadhars, the duplicate PAN numbers, and the persons who were not available but registered, all those illegal things have been weeded out, which means 2.7 lakh crores is the saving to the system, which will again be utilized for nation building. And you also have the Pradhan Mantri Swanidhi scheme, wherein about 78 lakh street vendors have been benefited.
And on record, about 2.3 lakh people have got the third tranche, which means they've taken the initial loan of 10,000, repaid it, got the second loan of 20,000, repaid it. Now they have been given the third thing. And the theme of the central government in this particular 10 years has been Vikas and Virasat. That is to club development with heritage. And how do we say that? On the one hand, we are seeing that how the transportation by road has increased, and how the National Highway Authority of India has progressed, and the number of kilometers of road being laid. And on the other side, you will see the heritage, which means we have, after 500 years, the Ram Mandir was, construction took place in Ayodhya and the Prana Pratishtha happened. And is it only a temple? No, it is an economic corridor. Because you look at the number of hotels and the allied businesses which have come up in Ayodhya now, which was missing 2 years ago when as AIFTP, when we went to the Lucknow. In convention in Lucknow. Lucknow. In Lucknow convention, there was a trip organized to Ayodhya. Compared to Ayodhya in 2021 December to 23 December or 24 January, the sea changes happened and the economy is boomed there. And that is what we're talking about, Vikas and Virasat, wherein the development is happening at the same time holding on to our heritage, which we should never forget. So on that angle, and if you look at the other education institutions, 7 IITs have been brought in, 16 triple IITs have been brought in, IIMs have increased by 7, 15 names, and more than 370 medical universities, which include medical colleges, have been brought in the last 10 years, which does a sea of good for the nation as a whole, because you look at from every beneficiary, whom now the PM has classified under 4 categories: the poor, the farmers, the women, and youth, which means the Prime Minister is wanting to go away from this traditional way of classifying people to say in different castes. We have to move towards like one nation, one tax. It has to be one nation, one caste. You can't have a caste. The caste should be of what we say as Bharat and Indian. So here when we say poor, farmers, women, and youth, what is got for the farmers? Under the Fasal Bima Yojana, about 4 crore farmers have been benefited. So therefore, at every stage, each of the so-called new Labharthis, what they call it as, have been benefited. Because if you look at Pradhan Mantri Awas Yojana and the women empowerment there, 70% of the houses, the ownership was with solely with women, 70%. And in the balance 30% also, it is a woman along with a gentleman, which means in 100% of the cases, woman is involved, in 70% solely so. So which is the extent of women empowerment. And you have the Har Nal Se Jal, the Jal Jeevan Mission, which is about, till about October 23, about 13.3 crore houses had access to direct drinking water from the taps, which was not there in the before 2014, which means somebody in Himachal Pradesh, people will agree with me, in the remote places there, in the hilly terrains, people had to walk many kilometers, even as early as say 2016-17 to fetch water, which has also been covered now. And you have the Ayushman Bharat Janaushadhi Kendras, which means at every stage, the poor and the marginalized are getting their due and they are being respected. And the biggest thing is the 220 crore doses of vaccine which has been doled out to the public at large. And also, we should not forget the poor and the needy. About 80 crore people in the country are being given free ration by the government, which at no point in time the previous all regimes, including the previous Bharatiya Janata Party government and other governments, were not in a position to do that. It is happening now because we have the confidence that we are growing at a faster pace. What was in the fragile 5 and we were top 10 in 2014, now we are in the top 5 in the country, inching towards a 5 trillion economy. And the best part is the larger states, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, who have been traditionally contributing more to the GST kit, now competing with each other to bring in 20% of 5 trillion. And now suddenly UPS jumped the bandwagon and says, look, I will reach there first because of the development which has taken place in the last 4 or 5 years in UP. So that each state is competing with the other. It is a very good case of territorial nationalism.
wherein each territory competes with the other. At the same time, the overall goal of nation building is taken care of. And coming to the governance, development, and performance, which is a new definition today, which is being given for GDP, wherein how to progress and how to go forward. And they're identifying aspirational districts in all the states, and you will have special schemes for them. And the eastern region has been given due emphasis, more so the northeastern region there. So therefore, at every point in time, all regions have been taken into confidence. And more so, if you look at the number of people who have been traveling by air has increased, because about 517 new routes have been brought in the airports, and more than, I think, 100 planes have been ordered by the Indian aviation industry, which shows that 1,000, yes. So it shows how much confidence we have in our economy, because what was about 70 airports, now it's about 149, which means every tier 2, tier 3 city now is getting connected with a airport. So therefore, it's a lot to do with where we are going as an economy and where we will reach. But nevertheless, not getting on to further numbers and other things, one thing is for sure, that gone are the days when the tax evasion could be easy. Now, with the seamless of exchange of information between the GST and income tax already in place, to a large extent, the cases have been detected much earlier. Now that they're wanting to bring in schemes wherein other government agencies will also be in line with providing data to income tax and GST, so that there will be correlation of data at one point in time. Even now, the government is sitting with huge dumps of data. The only analytics is taking place now. And at some point in time, we will not be surprised when government will know what your profit and loss account should look like, because we are moving towards a cashless economy where payments are happening through digital mode and the other person is recording it. And if more and more seedings happen and the control mechanism is either through PAN or Aadhaar, like how your AIS and TAS now is coming through, you will have data available on your income tax dashboard at all. And how they have brought about is the National Integrated Market for Electronic Goods, e-Mandi, which is again unheard of. On the electronic trading and e-Mandi, about 3 lakh crore of businesses happened there. So at every stage, like bringing in artisans and other 17 crafts, which were here to linked to only tier 2, tier 3 cities, now under the PM Vishwakarma Yojana they have brought in. And for small-time entrepreneurs and the MSME loans, Mudra loans have been given. About 22 lakh crores has been disbursed through Mudra loans. So therefore, a lot has been done, but definitely well begun is half done, because unless the objective of getting into the top 3 economies materializes, we will not be able to challenge. We have been challenging bigger economies now. The other one important factor is getting to being the number 3 is one thing. We have to increase the per capita income of the bottom half of the pyramid, wherein the diversity or the difference between the rich and the poor should narrow down, for which the various schemes such as Swanidhi and Mudra loans, which means you are empowering them to come to a different level. And more places are getting urbanized, which means the urban population is getting more, so that the needs of the urban middle class is much more than what a rural household will expect. So therefore, keeping in mind how the thing is progressed, definitely there will be brickbats, some issues which might have been handled better. Different economists will have different views on that. We are not debating on saying whether this has been the best tenure or not, but with complete confidence we can say that, but this particular decade has been probably one of the best in the past 6 or 7 decades, to say that how we have transformed ourselves from where we were in 2014 to where we are now, with due emphasis to youth and sports. And now look at what we are doing in the chess and the podium scheme for the Olympics, which came in, which means in the right direction. The direction is right. And it may take time in some of the measures to come through and reach a particular threshold. But I'm sure that in the days to come, where all of us as professionals have bigger responsibility as partners in nation building to take India to greater heights. Mathur sir, this I think would sum up the union budget. I didn't want to sound too political. I fully agree with you that the Honorable Finance Minister had time, all the time in the world to have a populist budget, but yes, he refrained from doing that.
Of course, easily the threshold limit could have been increased. By the tone or tenor of her speech, we thought that the 7 lakh is going to be Yes. somewhere 8, 9, but Correct. then she stopped before that. Of course, there are certain issues, 43BH. I would request the national president also to take a note of it, and all the members present here may, because we have got at least 3 months time now before this interim and final budget. So our representation, direct tax representation committee can come into the place, and whatever are the suggestions that we want to provide to this government for the simplification and rationalization of taxes may be given to the concerned person. I think can we have Mr. Kapil Jain from New Delhi to Yes, speak sir. on the indirect taxes, please? और Thank ये एक you. चीज है लक्ष्मण जी, अपन ये अपने पास है 3 months का, वी हैव गॉट अ टाइम ऑफ 3 months, तो ये मान के चलिए कि दिस इज लाइक एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी. It is being adjourned on the same in the month of July at the same time, and probably with the same speakers if the organizers permit. So we will have the next session there. Okay, okay. Correct, sir. Adjourned annual general meeting. Yes. So Mr. Minister Kapil Jain, please call him, please invite him. Sorry. Kapil sir, are you here? जी जी सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए. तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा AIFTP का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जीएसटी के बारे में कुछ बता पाऊं. हालांकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट स्पीच में सिंपल बोल दिया, ठीक है जी, कोई चेंजेस नहीं है ना जीएसटी के रेट्स में ना इनकम टैक्स में, तो ज्यादा कुछ कहना कोई नहीं. लेकिन फिर भी 3 सेक्शनों में चेंज हुआ है जीएसटी के अंदर, और ये 3 सेक्शन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है जिनमें चेंजेस हुआ है. तो आप सब लोगों के पास बजट की कॉपी आ गई होगी, सॉफ्ट कॉपी सब लोगों के पास होगी, तो वो 3 सेक्शंस पे ही मेरा फोकस होगा. या तो लक्ष्मण जी आप क्या करें, तो किसी भी स्क्रीन पर वो पेज खोल दे, पेज नंबर 42 से हमारा है 41 से, तो सब लोगों को कनेक्ट हो जाएगा अगर आप ओपन कर सकते हैं. तो नहीं तो अगर सब पे बजट कॉपी है तो मैं अपनी स्क्रीन से पढ़ लूंगा, आप वहां से हाईलाइट कर लीजिएगा अगर प्रिंट आउट आप लोगों पे है. तो We have हमारा got जो it, जीएसटी sir. में हमारे पास है जीएसटी सर, में आप जो करें. चेंजेस है वो 41 और 42 पेज नंबर पर है, ठीक है ना. तो 3 चेंजेस है, आप कंटिन्यू कीजिए. 3 चेंजेस है. सबसे पहले मैं पहला चेंजेस बताता हूँ. अगर आप लोगों को पता हो जीएसटी के अंदर, ठीक है ना, एक हमारा कंसेप्ट होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, और एक कंसेप्ट आईएसडी का तो था ही था, लेकिन कुछ लोगों ने एक कंसेप्ट बना लिया था जीएसटी में क्रॉस चार्ज को लेकर. जो क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट था उसमें सिंपल ये होता था कि मान लो कोई हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने कोई सर्विस ली, ठीक है ना, हेड ऑफिस कोई भी सर्विस लेता था तो वो किसी ब्रांच को बिलिंग कर देता था, ठीक है ना. वो कहता था मैं आईएसडी के झंझट में नहीं जाना चाहता, ना ही मुझे आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है ना, मैं तो सिंपल कोई भी सर्विस लूंगा और वो जो मैं सर्विस लूंगा अपनी ब्रांचेज को, ठीक है ना, एक अलग से बिल दे दूंगा, ठीक है ना, जिसे हम क्रॉस चार्ज बोलेंगे. मतलब मैं हेड ऑफिस हूँ मुंबई में, ठीक है ना, मैंने सर्विस ली, मैंने लक्ष्मण कश्यप जी की सर्विस ली, मेरे पास 5 लाख रुपए का बिल आया. अब वो जो सर्विस थी मैंने अपने पूरे ऑल इंडिया ब्रांचेज के लिए ली, तो वो जो 5 लाख रुपए का बिल है उसके 2 तरीके हैं कि मैं उस सर्विसेज को पहले तो आईएसडी रजिस्ट्रेशन कराऊं मुंबई में, उसके नाम पर वो बिल लूं और उस बिल को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं अपनी ब्रांचेज में उनकी टर्नओवर के रेशियो में, ठीक है ना जी. दूसरा तरीका ये था कि मैं अपना हेड ऑफिस से ही एक अलग से बिल दे दूं, आईएसडी का कोई रजिस्ट्रेशन ना करो, ठीक है ना. तो ये 2 मेथड चल रहे थे. तो हुआ क्या, कुछ दिन पहले, ठीक है ना, लास्ट ईयर ही एक सर्कुलर आया, ठीक है, आप सर्कुलर नंबर नोट कर सकते हो. सर्कुलर नंबर है 199, ठीक है, /11, ठीक है, 2023. उस सर्कुलर में इन्होंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे को आईएसडी करना आईएसडी करो, अगर तुम्हारे को क्रॉस चार्ज करना है क्रॉस चार्ज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं. उन्होंने अलग अलग चीजें बता दी. लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आईएसडी के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, क्रॉस चार्ज से चल रहा है, तो गवर्नमेंट का ना कंट्रोल खत्म हो रहा था. गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई इसके पे ना हमारा कंट्रोल रहे, ठीक है ना. तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट है वो खत्म ही कर दे रहे हैं, क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट खत्म कर दे रहे हैं. अब जीएसटी के अंदर कोई भी क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ एक ही कंसेप्ट रहेगा जिसका नाम होगा आईएसटी.
ठीक है ना, क्योंकि पहले जो लॉ था उसमें कहीं पर ऐसा मना नहीं था, वो क्रॉस चार्ज कर सकता था क्लाइंट, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करता था, कोई भी सर्विस लेता था और सर्विस लेने के बाद वही सर्विस अपनी ब्रांचों को दे देता था, कहीं पर जीएसटी में मना नहीं था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, सेक्शन 2 क्लोज 61, सेक्शन 2 क्लोज 61 में अमेंडमेंट करी। सेक्शन 2 क्लोज 61 किस चीज की बात करती थी कि भाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है क्या, तो उन्होंने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो डेफिनेशन थी उसी के अंदर लिख दिया, उसी के अंदर लिख दिया कि अगर कोई भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज के बिहाफ पर, अगर कोई भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांचेज के बिहाफ पर, मैं उस लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, लॉ में लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट पर्सन के बिहाफ पर, वो कह रहा है कभी कोई भी हेड ऑफिस अगर अपनी ब्रांचेज के बिहाफ पर कोई भी सर्विस लेता है तो यहां पर उसे आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 20। अब वो क्रॉस चार्ज नहीं कर सकता, अब उसे एज पर सेक्शन 20 अपने आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब मुद्दा आया कि सेक्शन 20 क्या है, तो सेक्शन 20 बात करता है हमारा आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पहला जो चेंज है वो सेक्शन 2 क्लोज 61 में चेंज है, जिसमें इन्होंने आईएसडी की डेफिनेशन में ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर कोई आप इनवॉइस रिसीव कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप रजिस्टर्ड से करो और अगर आप अनरजिस्टर्ड से कर रहे हो जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उन दोनों ही केसेस में आपको, ठीक है ना, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय वे ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मैंडेटरी। तो पहली चीज ये डेफिनेशन में चेंज है, सेक्शन 2 क्लोज 61। यहां तक किसी को पहली चेंजेस में कोई दिक्कत है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आईएसडी में ये चेंजेस हुआ है, ठीक है, इसमें अगर आपको ना समझ आए, ठीक है। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो मैं फिर अगले चेंजेस पे चल रहा हूँ। पहला चेंजेस ये क्लियर हो गया ये वाला, यस सर क्लियर है आगे। ठीक है। अब अगला जो चेंजेस है, अगला चेंजेस उन्होंने सेक्शन 20 में लिखा, सेक्शन 20 जो पहले था उसे पूरा चेंज कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। पहले जो सेक्शन 20 था वो बताता था कि एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर जो भी उसके पास आईटीसी आएगा उसे किस मैनर में बांटना है। इस बार इन्होंने क्या करा, सेक्शन 20 में मैनर नहीं बताया, इन्होंने कहा जी सेक्शन 20 में आईएसडी कैसे अपने इनपुट को बांटेगा वो हम रूल्स में बताएंगे। पहले इन्होंने सेक्शन के अंदर ही मैनर लिखा हुआ था, अब इन्होंने बता दिया कि रूल्स में हम उन चीजों को बताएंगे। तो जो सेक्शन 20 पहले बात करता था डिस्ट्रीब्यूशन की भी कि मेथड क्या होगा, वो अब इन्होंने यहां से हटा दिया, उसे रूल से मैनेज करेंगे, इसलिए इन्होंने सेक्शन 20 को चेंज करा। एक तो डेफिनेशन चेंज करी, भाई सेक्शन 21 में लिखा हुआ कि भाई ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना, और मैंडेटरी लिख दिया, वहां पर वर्ड क्या कर दिया, सेल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सेल डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि भाई उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना, ये भी लिख दिया सेक्शन में, और साथ में ये भी लिख दिया कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, आप ये नहीं कर सकते कि भाई मैं तो क्रॉस चार्ज करूंगा। और जो सबसेक्शन 2 और 3 है, ठीक है, उसमें लिख दिया कि भाई विद इन सच टाइम, ठीक है ना, एंड सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस। तो वो रूल्स के अंदर ये कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस लिख देंगे जिसके अंदर से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब आप ये चीज समझ लीजिए, अगर कोई हेड ऑफिस है अपनी ब्रांचेज के भी आप पर, ठीक है, कोई भी सर्विस ले रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए वो अब क्रॉस चार्ज नहीं कर सकता, उसे आईएसडी में ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कोई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके डिस्टिंक्ट पर्सन है और वो पहले क्रॉस चार्ज करा करते थे, अब वो क्रॉस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। तो पहला ये चेंजेस है, यहां तक क्लियर हो गया। तो मैंने एक चेंजेस बताया आपको डेफिनेशन में, एक चेंजेस बताया सेक्शन 20 में, यहां तक क्लियर है। तो मैं तीसरा चेंजेस बताऊंगा जो कि जीएसटी के अंदर लास्ट चेंज है। यस सर। ये क्लियर हो गया। चलिए, अब जीएसटी के अंदर जो तीसरा चेंजेस है वो उन लोगों के लिए है, ठीक है ना, जो डील करते हैं किन गुड्स में, तंबाकू में, पान मसाला में, इस तरह के कुछ गुड्स है जिन्हें अभी 2024 में ही 5 जनवरी को नोटिफिकेशन आई थी, मतलब कि ऑर्डर आया था एक, उस ऑर्डर में लिखा गया था कि भाई इन लोगों से ना टैक्स कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज होते हैं। मैन्युफैक्चरर से, ठीक है ना, रिटेलर पे जाता है, ठीक है, फिर रिटेलर से कलेक्ट करो, हमें इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट बनाया, एक्साइज में कंसेप्ट हुआ करता था कि भाई ऐसा करो, इस तरह के प्रोडक्ट पर अगर हमारे को टैक्स कलेक्शन में दिक्कत है तो इस पे ना प्रोडक्शन के समय ही टैक्स ले लो, ठीक है ना। प्रोडक्शन के समय टैक्स कैसे ले लो कि उसकी जो मशीन है उसकी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से रेट डिसाइड कर दो और वहां से टैक्स ले लो। तो इन्होंने क्या करा था, ठीक है, तंबाकू वालों को बोल दिया था
कि भाई जो जो आपके पास मशीन है, अब दो तरह की मशीन हो सकती है। एक तो या तो आपको प्रोडक्शन जो मशीन कर रही है उस पर टैक्स लगा दो, या आप ऐसा करो कि जो पैकिंग मशीन है उस पर टैक्स लगा दो। तो अब आप ये मुझे बताओ, तंबाकू वाले केस में क्या करा होगा? प्रोडक्शन पे करा होगा या पैकिंग पे करा होगा? प्रोडक्शन पे करा होगा या पैकिंग पे करा होगा? आप एक बार सोच के बताओ कि प्रोडक्शन पे करा होगा या पैकिंग पे करा होगा। हाँ जी, मार्केट में तो पैकेट ही बिकते, ठीक है ना। तो मार्केट में जो ये पैकेट्स बिकते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि हम क्या करते हैं ना, पैकेट्स के बेस पे टैक्स लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी तंबाकू मैन्युफैक्चरर है, एक पूरी लिस्ट है, ठीक है ना, उस लिस्ट को आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। 5 जनवरी को स्पेशल ऑर्डर आया हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई जो भी ये ठीक है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो तंबाकू वगैरह के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, हमने क्या करा, इनके लिए स्पेशल प्रोसीजर बना दिया कि तुम्हारे को टैक्स ऐसे पे करना है अपनी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, अपनी मशीन को ना दिखाए या कम दिखाए। तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे को पता लग गया कि तुमने जो मशीनरी थी 10 थी तुम्हारी फैक्ट्री में, और तुमने दिखा दिया 8, कि चलो भाई हमने 8 मशीन दिखा रखी है, उस पर टैक्स दे रहे, ठीक है ना। भाई पर मशीन मान लो हमने 1 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो हमने मशीन के हिसाब से दिखा दिया। अब तुमने कम मशीन दिखाई तो पेनल्टी प्रोविजन कोई नहीं था इसमें। तो इन्होंने क्या करा, सेक्शन 122A, सेक्शन 122A एक नया सेक्शन इंसर्ट करा। किस चीज के लिए इंसर्ट करा इस नए सेक्शन को, कि भाई पेनल्टी फॉर फेलियर टू रजिस्टर सर्टेन मशीन्स, कि अगर आपने उस मशीन को रजिस्टर नहीं कराया। सर मशीन कैसे रजिस्टर्ड होगी? तो जो मैं आपको ऑर्डर की बात कर रहा हूँ 5 जनवरी वाले की, उसे एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। उस ऑर्डर के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि भाई जो भी आप पैकिंग मशीन करोगे, जितनी भी पैकिंग मशीन करोगे, लेकर आओगे, उसे सबको पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है। कोई नई मशीन लेकर आओगे तो भी चेंज कराना है, अगर उसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है तो भी चेंज कराना है, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना है कि भाई हमारी इतनी इतनी मशीनें हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ उसमें ऐड कर रहे हो, कैपेसिटी चेंज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो मैन्युफैक्चरर है उसे पोर्टल पर देनी है। अब पोर्टल पर अगर वो नहीं देता है, अगर वो पोर्टल पर नहीं देता है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, उस पर मशीन 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, पर मशीन 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। तो इन्होंने सेक्शन 122A में क्या लिखा, मैं पढ़कर बता देता हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, ठीक है ना। किसके लिए? जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है। कौन से गुड्स का? इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एनी स्पेशल प्रोसीजर, सारे मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं, उन मैन्युफैक्चरर के लिए जिनके लिए स्पेशल प्रोसीजर लाया गया है। कौन से सेक्शन में लाया गया है? सेक्शन 148 में। और क्या स्पेशल प्रोसीजर लाया गया है? रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन, कि भाई आपको इन मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 148 का अगर वो कंट्रावेंशन करता है स्पेशल प्रोसीजर का, ही शैल इन एडिशन टू एनी पेनल्टी, उसके ऊपर जो पेनल्टी बाकी लग रही है वो लगती रहेगी, और एनी प्रोविजन बी लायबल टू ए पेनल्टी इक्वल टू एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज, कि भाई 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी फॉर एवरी मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड। तो अगर आपने कोई मशीन रजिस्टर्ड नहीं कराई, तो उसके लिए पर मशीन के लिए आपको 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या लिखा कि भाई पेनल्टी तो लगी रही है, साथ में इन्होंने क्या लिखा कि जो पेनल्टी लग रही है उसके बाद भी हम आपकी मशीन को सीज कर सकते हैं। भाई हम आपके यहाँ विजिट करने आए, हमने देखा कि भाई 10 मशीनें लगी हुई है फैक्ट्री में, और आप जो हमारे को टैक्स दे रहे थे 8 पे दे रहे थे। तो उन्होंने लिखा इन एडिशन टू द पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 1 एवरी मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड शैल बी लायबल टू फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। हम उसे तुरंत की तुरंत सीज कर देंगे और उसके बाद हम उसे जब्त कर लेंगे। अब मान लो मशीन है 5 करोड़ की, ठीक है ना, मशीन है 5 करोड़ की, उसे सीज कर लिया। अब वगैरह हम तो इसकी नीलामी करेंगे। उसने कहा भाई साहब टैक्सी तो चोरी कराए, टैक्स ले लो, टैक्सी तो चोरी करा, टैक्स ले लो, मेरी मशीन को छोड़ दो। तो आगे प्रोविजो लिखा गया दैट सच मशीन शैल नॉट बी कॉन्फिस्केटेड, कि उस मशीन को हम जब्त नहीं करेंगे। कब? जो पेनल्टी हम तुम पर लगा रहे हैं, एक तो वो पे कर दो, ठीक है ना, और इस मशीन को रजिस्ट्रेशन करा लो स्पेशल प्रोसीजर से विद इन 3 डेज। विद इन 3 डेज अगर पेनल्टी का ऑर्डर आ गया, और पेनल्टी के ऑर्डर आने के बाद अगर आप 3 दिन के अंदर उस मशीन को रजिस्टर्ड करा लेते हो, तब आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये इंडस्ट्री बेस, ठीक है ना, ये इंडस्ट्री बेस बजट के अंदर चेंजेस आए हैं। पहली इंडस्ट्री वो है जो आईएसडी और क्रॉस चार्ज दोनों करती थी, या सिर्फ क्रॉस चार्ज करती थी।
तो उनके लिए बोल दिया क्रॉस चार्ज नहीं है, सिर्फ आईएसडी करना पड़ेगा। दूसरा है जो मैन्युफैक्चरर थे ऐसे गुड्स के, तंबाकू पान मसाला के, उन्हें बोल दिया कि भाई जो मशीन वाला प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन वाला, आप अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो ये ही 2 चेंजेस आए हैं। इनसे रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस वगैरह जब ये लो बनेगा तब उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये वाले भी प्रोसीजर जो है ना, जो ये मशीन वाला मैं बता रहा हूँ आपको, तो अगर आप 5 जनवरी की नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वो 1 अप्रैल से ही लागू होना है। तो 1 अप्रैल से वो लागू होना है, तो अगर पेनल्टी नहीं लगाते ये तो कुछ लोग उसे फॉलो भी नहीं करते, तो उसे प्रॉपर फॉलो कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर पेनल्टी लगाई। और आईएसडी में कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि भाई ये कंफ्यूजन ना हो, तो इन्होंने क्रॉस चार्ज वाले कंसेप्ट को खत्म ही कर दिया, क्योंकि क्रॉस चार्ज लगाने से गवर्नमेंट को नुकसान है। क्रॉस चार्ज लगाने से गवर्नमेंट को नुकसान क्यों है कि भाई अगर कोई व्यक्ति क्रॉस चार्ज लगा लेता है तो वो क्या करता है, उन ब्रांचों को लिंक कर देता है जो कि ब्रांचें टैक्सेबल है। ठीक है ना, मान लो मैं हेड ऑफिस हूँ, मैंने एडवोकेट साहब से आपसे कोई बिल लिया 5 लाख रुपए का, उस पर 90,000 जीएसटी है, तो अब मुझे बांटना है 3 ब्रांचों में। तो अगर मैं आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो मुझे तीनों ब्रांचों में उनकी टर्नओवर के बेसिस पे बांटना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं क्रॉस चार्ज करता था तो मैं क्या चालाकी करता था, 2 ब्रांच मेरी टैक्सेबल में रजिस्टर्ड थी, एक एग्जेम्प्ट गुड्स बेचती थी, तो मैं क्या करता था, क्रॉस चार्ज में बिलिंग उन 2 ब्रांचों को कर देता था जो टैक्सेबल वाली थी, एग्जेम्प्ट वाली को नहीं करता था। लेकिन अगर आईएसडी ही ऑप्शन रहेगा तो मुझे उस ब्रांच को भी बिलिंग करनी पड़ेगी जो एग्जेम्प्ट है। तो वहां पर गवर्नमेंट को यह फायदा हो सकता है कि भाई कि आईटीसी तीसरी ब्रांच में लैप्स हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्रॉस चार्ज को खत्म करा, क्योंकि क्रॉस चार्ज को गवर्नमेंट चेक भी नहीं कर पा रही थी कि उसे चेक कैसे करे। ठीक है ना, तो इसलिए इन्होंने आईएसटी करा। तो यही 2-3 चेंजेस थे जो मैंने बता दिए। दिस इज फाइनल फ्रॉम माय साइड, लक्ष्मण कश्यप जी। थैंक यू सर, वेरी नाइस डेलिब्रेशन, थैंक यू सर। और कुछ बस टेक्निकली एंड नहीं है, तो अपन कुछ महीने बाद दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए आपको वोट ऑफ थैंक्स दे सकते हैं। सर मैं क्लोज करने से पहले जॉन चेयरमैन नवलखा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सीजेड के फर्दर प्रोग्राम के बारे आगामी में थोड़ा प्रोग्राम सा डिस्कस। नमस्कार सर। उज्जैन में मार्च में एक सेमिनार अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वैसे वो 14, 15, 16 में से कौन सी एक डेट पे 15 को अपना पूरा सेशन रहेगा और बाकी भ्रमण रहेगा उज्जैन दर्शन वगैरह का। तो उसको इमीडिएट अभी हम अनाउंस करने वाले हैं, 2-4 दिन में सब ब्रोशर वगैरह आ जाएगा। तो आप सबसे पूरे एएफटी के सभी मेंबर से निवेदन है कि उसमें अधिक से अधिक ज्वाइन करें। ये एक प्रोग्राम है अभी वर्तमान। सर एक रीवा वाला भी है, वो भी थोड़ा डिस्कस। मिश्रा जी बोलेंगे रीवा से कि मैं बोलूं? विजयकांत मिश्रा जी, विजयकांत मिश्रा जी, सर आप बोल दीजिए, वो है वो 24 फरवरी 24 फरवरी को रीवा में कॉन्फ्रेंस रखी है, फुल डे कॉन्फ्रेंस है। और उसमें उसका ब्रोशर वगैरह जारी हो गया है और उसको अनाउंस भी हो गया है। तो उसमें भी निवेदन है, उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ज्वाइन कर। Okay, thank you, sir. It's time for vote of thanks. So, first of all, spread my most sincere thanks our national president, Sh.Narayan Jain sahab. Sincere thank our immediate past president, Shri Pankaj Ghiya ji. I would like to thanks past president, Shri Ganesh Purohit ji, NBP Rajesh Mehta ji, National Joint Secretary Sandeep Agrawal ji, our Joint Chairman Navalkha ji, and sincere thank our speakers, C. Anil Mathur, National Treasurer, sir, C. Prashanth G.S, Bengaluru, and C. Kapil Jain, New Delhi, for giving excellent coverage on GST and income tax. I am thankful to all the participants for attending the webinar. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। जस्ट लक्ष्मण जी एक क्वेरी है, अगर आप कहें कि वो है तो 43 BH पे, इट इज इट एप्लीकेबल टू ट्रेडर्स आल्सो?
तो ट्रेडर जो है वो इस होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स इसके ऊपर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वाले और सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर ही 43BH का क्लॉज यस सर। एप्लीकेबल होगा। They just wanted to give this answer to this. अमित गोयनका जी की क्वेरी थी। थैंक यू। I think Prashanth sir is better. Prashanth sir. नहीं है। I सर think इसमें he's यही, इसमें नहीं सर, इसमें यही है कि अपन जो ट्रेडर्स है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और अपने सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर्स है ना, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा 15 डेज एंड विद एग्रीमेंट 45 डेज। नहीं, वो मैंने सिर्फ वो आंसर दिया था क्योंकि चैट बॉक्स में क्वेरी आई थी। हाँ आई नहीं, जस्ट बिल्कुल आंसर्ड कि भाई ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इट्स अ यस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। एग्जैक्टली राइट सर, राइट। ओके, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू। रवि जी, एंड द मीटिंग।